Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself Navneet Patel and today we are going to start with the topic atomic structure, which is the second chapter of 11th class, and this is the part second. In previous video already we have to discuss about the discovery of atom and the basic concept of atom, okay, and some discoveries. But today we will study about the discovery of electron. That means how electron was discovered. Okay. So as you know, in a code in about 1859, Julius Plücker is a scientist. Julius Plücker is a scientist which do the experiment. What was the experiment? It is he was studied about the ionization of gas. That means effect of pressure in a vacuum. That means he was done an experiment of discharge of a gas in a discharge tube. Discharge of a gas in a discharge tube. He take a discharge tube, glass discharge tube like this, okay, and set two electrodes, metal electrodes, and connect with the voltage and create near about 10,000 volt, and create a vacuum by using the vacuum pump near about 10 to power minus 2 to 10 to power minus 4 mmHg. Okay students, and this was the plus plate and this was negative plate. So this plate is known as the cathode and this plate is known as the anode. Okay. According to the Julius Plücker done this experiment, but he do not study about the rays of cathode rays like this. He fill a gas and like this, okay, because we cannot see the gas. After some year, J.J. Thomson and William Crookes again done this experiment and see something different. Okay, so when gas filled any gas like maybe another gas or another gas, okay, and put the fluorescent. He used the zinc sulfide or zinc sulfate, ZNS or fluorescent. Okay. He saw some invisible particles are released from the cathode. Invisible particles released from the cathode and move towards the anode, because this is the anode, and cross the anode wall and strike on the zinc plate, that means the fluorescent plate, and create glow. Okay, you can say कुछ इनविजिबल पार्टिकल्स कैथोड प्लेट से रिलीज होकर एनोड प्लेट को क्रॉस करके इस वॉल पर स्ट्राइक कर रहे थे. अब इनविजिबल पार्टिकल्स थे, उन्हें कैसे दिखाई दिया, इसके डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे. सो ओवरऑल हम आपको फिर से ट्रांसलेट करके समझा रहे हैं. विलियम
जूलियस प्लगर ने इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया नियर अबाउट 1859 के आसपास। उन्होंने एक स्टडी कर रहे थे, वो गैस के डिस्चार्ज को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, इस डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट किया बाय द यूजिंग द वैक्यूम पंप, ओके। एंड बाय यूजिंग द वैक्यूम पंप का काम है एयर को बाहर निकालना। जब एयर को बाहर निकालेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर उन्होंने रखा नियर अबाउट 10 to power minus 2 mmHg और इसमें गैस फिल की। और गैस फिल करने के बाद इतने वोल्टेज पर दो प्लेट्स पे गैस को डिस्चार्ज किया, यानी आयनाइजेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। गैस आयनाइज कितने टेंपरेचर पे, प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर स्टडी किया जे थॉमसन और विलियम ब्रूक्स ने। उन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं कैथोड से, और कैथोड से निकल कर ये इसकी जो ये फ्लोरोसेंट यूज की थी उन्होंने एनोड के पीछे वाली वॉल पर, यहाँ पर जाकर ग्लो क्रिएट कर रहे थे ग्रीन कलर की। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको ये तो समझ में आ गया कि अगर पार्टिकल यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट पर स्ट्राइक कर रहे हैं, सो पॉजिटिव प्लेट पर पार्टिकल वही स्ट्राइक कर सकता है जिस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तो उन्होंने इनको एक नाम दिया, these particles are known as the cathode rays. These particles are known as the cathode rays. And one more scientist also involved in this experiment. The name is the scientist Stoney. Stoney was said that these particles are made of the tiny particles, and this particle is known as the electron. Stoney ने इसका इलेक्ट्रॉन वर्ड जो दिया वो किसने दिया, स्टोनी ने दिया कि कैथोड रेज जिन पार्टिकल्स से बनी है उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ओके, नेगेटिव प्लेट। अभी इनका नाम कैथोड रेज क्यों कहा गया, क्योंकि इनका जनरेट कहां से हो रही थी, कैथोड प्लेट से जनरेट हो रही थी, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर वी विल स्टडी अबाउट द properties of cathode rays. Okay students, so these are some properties of cathode rays, okay, and these properties given by the J. Thomson and William Brooks. So these properties are, first one is cathode rays travel in a straight line. That means when cathode rays generate from the, suppose it is the cathode plate, this is the cathode plate and is the anode plate. When cathode rays move from the here, so these particles move in a straight line and strike on the wall of discharge tube. That means you can say these particles stay going in a straight line. Okay, second property is cathode rays possess mass and the kinetic energy. How can they judge the cathode particles having some mass and energy? So आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। जैसे थॉमसन ने एक व्हील रखा है इनके पाथ पर एक इस तरह का व्हील रख दिया सपोज, ओके। सो जैसे पार्टिकल्स ये जनरेट होकर यहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्टिकल्स को इस जो माइका का बना हुआ व्हील था, किसका बना हुआ था, माइका का बना हुआ व्हील था। तो जैसे ये यहाँ से क्रॉस करे तो ये व्हील मूव कर गया। व्हील मूव कर रहा है यानी कि ये कैथोड पार्टिकल्स हिट ऑन द व्हील, देन व्हील विल बी मूव। So that is why you can justify these particles having some mass and kinetic energy, because अगर mass और kinetic energy नहीं होता तो ये particles wheel को move नहीं करा सकते थे। Okay. So now next property, the electric field cathode is deflected towards the positive electrode. Suppose मान चलो यहाँ से कैथोड रेज जनरेट हो रही है और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, पॉजिटिव प्लेट यहाँ नेगेटिव प्लेट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज यहाँ से जब जाएंगी तो आपको पता है कैथोड नेगेटिव पार्टिकल्स से बनी होती है, और जब ये नेगेटिव पार्टिकल्स से बनी होती है तो किस तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड द कैथोड रेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, दैट इज यू कैन से द कैथोड रेज आर मेड अप बाय द tiny particles, tiny negative particle, and these particles are known as the electron. These particle is known as the electron. Okay students, now next property, cathode rays causes the ionization of the gas. Suppose अगर एक कंटेनर लिया उसमें कैथोड रेज को एंटर करा देते हैं तो वो गैसेस को आयनाइज कर देती हैं। नेचर होता है कैथोड रेज में।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैथोड रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। अगर कैथोड रेज मूवमेंट कर रहे हो फोटोग्राफिक प्लेट उनकी पाथ पर रख दिया जाता है तो फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक हो जाती है, यानी कि अफेक्ट करता है कौन, कैथोड रेज फोटोग्राफिक प्लेट को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैथोड रेज पास थ्रू द थिन मेटल। अगर आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ से इस डिस्चार्ज ट्यूब अगर यहाँ से कैथोड रेज पास होकर यहाँ पर आ रही हैं, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव, अगर ये रास्ते बहुत थिन पतली लेयर मेटल की रख दें तो ये मेटल की थिन लेयर को क्रॉस करके यहाँ पर स्ट्राइक कर रही थी। इसका मतलब क्या है, अगर ये क्रॉस कर रही हैं इसका मीनिंग है कि दीज पार्टिकल्स हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, इनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है और मास है। अगर काइनेटिक एनर्जी है और मास है तो कैथोड रेज में क्या होगा, मोमेंटम होगा। क्या होगा, मोमेंटम। यू नो फिजिक्स के अकॉर्डिंग P इक्वल टू mp। ओके, अगर मास है, वेलोसिटी है, तो जाहिर सी बात उसमें क्या होगा, मोमेंटम। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन द कैथोड रेज हिट ऑन द हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल देन एक्स-रे प्रोड्यूस। अगर कैथोड पार्टिकल्स को या कैथोड रेज को कोई हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल लाइक एज टंगस्टन, you know tungsten having the high melting point near about the 3500 approximate। okay, so अगर ये हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल पर स्ट्राइक करती हैं तो फिर क्या होगा, वहां से एक्स-रे प्रोड्यूस हो जाती है। so these are some properties of cathode rays। okay students, in next video we will meet with the value of E upon m for the electron।